along with my classmates, welcome you all to today's assembly conducted by 4E on the topic gratitude. Prayer is aligning ourselves with the purpose of God. It is time to invoke the blessings of the Almighty. So, I would like to call upon Aya to say the prayer. Please join your hands and close your eyes for the prayer. Thank you, Lord, for the blessings you have bestowed on my life. You have provided me with more than I could ever imagine. You have given me family and friends who bless me every day with kind words and actions. They lift me up in ways that keep my eyes focused on you and make my spirit soar. Also, thank you, Lord, for keeping me and those around me safe and loved. Lord, I pray that you remind me of just how blessed I am and that you never allow me to forget to show my gratitude in prayers and return acts of kindness. Amen. I would like to invite Vidhi to share the thought for the day. Good morning. The thought for the day is gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. We should learn to be thankful for what we have while strive for what we want. Counting your blessings and being grateful for even the little things in life should be our ways of living. Storytelling is the most powerful way to put ideas into the world. Now, my friend Bhamika is going to narrate an inspirational story underlining the importance of gratitude in our life, followed by a short self composed poem by Nema. One day, a teacher entered the classroom and asked the students to prepare for a surprise test. They all waited anxiously at their desks for the exam to begin. The teacher handed out the exam sheets with the text facing down. As usual, once he handed them all out, he asked the students to turn over the papers. To everyone's surprise, there were no questions, just a black dot in the center of the sheet of paper. The teacher, seeing the expression on everyone's faces, told them the following: I want you to write about what you say there. The students, confused, got started with the inexplicable task. At the end of the class, the professor took all the exam sheets and started reading each one of them out loud in front of all the students. All of them, with no exception, defined the black dot, trying to explain its position in the center of the sheet. After all had been read, the teacher started to explain. I'm not going to grade you on this. I just wanted to give you something to think about. No one wrote about the white part of the paper. Everyone focused on the black dot, and the same happens in our lives. We have a piece of paper to observe and enjoy, but we always focus on our dark spots. Our life is a gift, and we always have reasons to celebrate. The dark spots are very small when compared to everything we have in our lives, but they are the ones that pollute our mind. Take your eyes away from the black dots in our life. Enjoy each one of your blessings and each moment that life gives you. Be happy and live a wholesome life. Good morning, everyone. I am Dimanshu and I will be reciting a self-composed poem. We must show everyone gratitude. Let's develop this attitude. Thank you in our prayers we must include. And with anyone we must not be rude. This will always keep us in a happy mood. Appreciate everything, including food. Always smile and show gratitude. With this thought, I conclude. Wow, friends, what a motivational story and poem. Forgiveness is the virtue of the brave. To seek forgiveness, we must pray to the Almighty. I would like to call upon my friend Arav for the forgiveness prayer. Please join your hands and close your eyes. Thank you, Lord, for the gift of forgiveness. Father, may your sweet words saturate my mind and direct my thought. Help me walk in righteousness, peace, and joy. I choose to be kind and compassionate, forgiving others just as you forgive me. Amen.
Now, I would like to request Saga ma'am to say a few words. Good morning, everyone. I would like to begin with these lines. Be thankful for difficult times because during those times you grow. Be thankful for your limitations because they give you opportunities for improvement. Be thankful for new challenges because they build your strength and character. Be thankful for your mistakes because they teach you valuable lessons. Dear children, when your life seems full of troubles, it seems difficult to maintain an attitude of gratitude, doesn't it? And the times when everything just seems to be going on smoothly, we often take these precious moments for granted, don't we? It should caught up in the bliss, comfort, and familiarity of it all. We can simply forget to be thankful. Therefore, expressing gratitude should be a habit. It should be the way of looking at the world and all the good things in it with a feeling of appreciation, regardless of whether or not your current situation is to your liking. When you practice this feeling of gratitude, it attracts even more things in your life for which you need to be grateful. Go ahead, try it out right now. What or who do you have in your life to be thankful for? Let us just close our eyes for a few seconds and express our gratitude. Sarvaj is here to recite a Hindi poem paying gratitude to Mother Nature. सुप्रभात, मेरा नाम सरवार रस्तोगी है। मैं कक्षा 4E का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कृतज्ञ हूँ मैं। कृतज्ञ हूँ मैं, कृतज्ञ हूँ मैं। जैसे आसमान की कृतज्ञ है धरती, से धरती का कृतज्ञ है किसान। कृतज्ञ हूँ मैं। जैसे सागर का कृतज्ञ है बादल, जैसे नए जीवन के लिए बादल का आभारी है हर इंसान। कृतज्ञ हूँ मैं। जैसे सभ्यताएं कृतज्ञ हैं नदी के प्रति, हम मनुष्य कृतज्ञ हैं ईश्वर के प्रति, जिन्होंने इतना सुंदर संसार दिया। कृतज्ञ हूँ मैं, कृतज्ञ हूँ मैं। Yes, my dear friends, we shall be forever indebted to Mother Nature for providing us in abundance. I would like to invite our beloved Anita ma'am to enlighten us with her words. धन्यवाद सम्यक। नमस्कार। आज की असेंबली का विषय ग्रेटिट्यूड, जिसका हिंदी में अर्थ कृतज्ञता, धन्यवाद या आभार देना होता है। बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा। कृतज्ञता दी गई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का, श्रद्धा के अर्पण का भाव है। जो दिया है उसके हम ऋणी हैं। उसकी अभिव्यक्ति ही कृतज्ञता है और अवसर आने पर उसे समुचित रूप से लौटा देना ही इस गुण का मूल मंत्र है। बच्चों, कृतज्ञता का अनुपम उदाहरण आपसे साझा करने जा रही हूँ। स्कॉटलैंड में एक गांव था। उसमें एक किसान था जिसका नाम फ्लेमिंग था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था। तब तक उसने किसी बच्चे की चीखने की आवाज सुनी। दौड़ता दौड़ता गया और देखा एक बच्चा दलदल में धंसता जा रहा है। उसने उस बच्चे को बचाया, नहला धुलाकर उसके घर वापस भेज दिया। अगले दिन उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक अमीर व्यक्ति निकला। उसका नाम चर्चिल था। उसने किसान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आभार जताते हुए कहा, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, इसके बदले मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। किसान ने कहा, अरे मैं तो ये इंसानियत के नाते किया है, ये मानवता का काम है, ये इनाम कैसा? और उसने इनाम लेने से इनकार कर दिया। तब तक झोपड़ी में से एक बच्चा दौड़ता हुआ बाहर निकला। अमीर व्यक्ति ने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? किसान ने कहा, हाँ। फिर अमीर व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेता हूँ। और बच्चों, ऐसा ही हुआ। चर्चिल ने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और लंदन के प्रसिद्ध विद्यालय सेंट मैरीज मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया। बच्चे ने लगन से पढ़ाई की और बच्चों 1928 में उसने जीवन रक्षक
एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की, जिससे आज भी लाखों लोगों की जान बचती है। नाम तो आप समझ गए होंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक घटना और घटी बच्चों। जो अमीर व्यक्ति था चर्चिल, उनका बेटा एक बार बीमार पड़ा और इसी जीवन रक्षक पेनिसिलिन की वजह से उसकी जान बची। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि दो पक्षों के बीच का संबंध कृतज्ञता से मधुर होता है और यह वो भाव है जो जीवन को खुशियों से भर देती है। बच्चों, जैसा कि अभी शागिया मैम ने कहा कि हम कृतज्ञ हों उन लोगों के प्रति जो हमारे सहायक हैं, ईश्वर हैं। अपने मन, अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होइए बच्चों। और ये निर्जीव वस्तुएं हैं जिनसे की वजह से आपका जीवन सरल हो गया है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर। इस महामारी में भी दूर रहकर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अतः बच्चों, अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए इस क्रिया को करने के लिए। 1 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी वजह से आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका जीवन सुखमय में होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your uplifting words. Let us conclude this assembly by chanting a shloka. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।